Students, we were on the fourth question, and the fourth question is, what was the condition of mankind before the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Students, the writer is asking about the pre-Islamic era. राइटर हमसे ये पूछना चाहता है कि सोसाइटी के क्या हालात थे या उस मुआशरे के क्या हालात थे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले या इस्लाम की आमद से पहले. सो मैनकाइंड वाज स्टूड ऑन द वर्ज ऑफ केओस. इट सीम्स दैट जिस सल्तनत को बनने में हज़ारों साल लगे थे, वो अरबिक सल्तनत को, अब वो बिल्कुल बिखरने के करीब थी, क्योंकि दे वर इंडल्ज इन डिफरेंट इग्नोरेंट एक्टिविटीज लाइक बरियल ऑफ इन्फेंट्स, not giving any rights to women, गुलामों के साथ बदतरीन सलूक, gambling, womanizing, and a lot of other evil things. We can say that the society and the people of that society were extremely ignorant and they were following different superstitions as well. I hope I answered the question. Thank you.